I think this is a tarot, stained glass tarot. It's like a different style. And ये ऐसे लिखा हुआ है, आई थिंक ये किस में रहता है, 689 MRP लिखा हुआ है. ये फ्लिपकार्ट या अमेजोन में रहता है. पैट मैंने देखा है पहले, तो सेम ही सेलर रहते हैं. एंड इतना चीप टैरो वैसे भी नहीं मिलता है. तो इस एजेस 14 प्लस, एजेस 18 प्लस, 20-30 प्लस लिखो भाई. क्योंकि नॉट बिकॉज ऑफ द विजुअल बट बिकॉज ऑफ द थिंग दैट इट डिपिक्ट्स. इट्स लाइक इट डिपिक्ट्स लॉट ऑफ थिंग्स. सो इट इज़ लाइक अ प्लेइंग कार्ड वाला टैरो ऐसा लग रहा है, मतलब. And I just like the back design. It just looks like a playing card because the size is looks like a playing card. And this is like the magician, two of swords. These are I think modern figures, and it's like a stained glass figures. So और मेरे को AI वाला बहुत फील तो आ रहा है. टाइप्स मतलब आजकल कोई AI में डाल के भी ये सारे के सारे बना सकता है. मतलब इट इस टेक्नोलॉजी उस लेवल पे पहुंच गई है. This is 6 of cups, 6 of wands, 6 of pentacles, 7 of swords, 7 of cups. This I don't like because the older ones are much more intuitive as compared to this. But yeah, it's stained glass, it's new, but it's not differentiable, so I won't recommend it. But if you are into this kind of art style, up to you. Link in the description. Good. It's the size is little smaller, but yeah, link in the description. Bye bye. Thank you.